बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे। वो लोग जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मुसलसल मिलते रहें। जिनाह इन पाकिस्तान, जिनाह का तस्वर पाकिस्तान यूनिट 2 है और सेकेंड ईयर की इंग्लिश है फेडरल बोर्ड की। मोहम्मद अली जिन्नाह प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्नाह का सदारती खिताब पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली को। On 11th August 11th 1947, Qaeda Muhammad Ali Jinnah delivered his famous speech before the Constituent Assembly of the newly established state of Pakistan. In his address, he gave vent to his vision of Pakistan. He dwelt on the primary functions and responsibilities of the Virgin Constituent Assembly and warned against certain evils that might befall the new country and spoke in defense of the partition of India. His speech is as follows. जिन्नाह का तस्वर पाकिस्तान। 11 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने नए तख्लीक शुदा रियासत पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली के सामने मशहूर खिताब किया। अपने खिताब में आपने पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लाए अमल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। आपने असेंबली के मकासद और जिम्मेदारियों की वजाहत की। चंद खतरात के बारे में मुतनब्बा किया जो इस नुज़ैदा मुल्क को नुकसान पहुँचा सकते थे और हिंदुस्तान की तकसीम के हक में दलाइल दिए। आपकी तकरीर मुदर्रज झैल है। Mr. President, ladies and gentlemen, I cordially thank you with the utmost sincerity for the honor you have conferred upon me, the greatest honor that possible to confer by electing me as your first president. जनाब सदर, ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों ने मुझे जो इज़्ज़त दी है, सबसे बड़ी इज़्ज़त के मुझे अपना पहला सदर मुंतखब किया, इसके लिए दिल की गहराइयों और पूरे इखलास के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। I also thank those leaders who have spoken in appreciation of my services and their personal references to me. I sincerely hope that with your support and your cooperation, we shall make this Constituent Assembly an example to the world. The Constituent Assembly has got two main functions to perform. मैं इन रहनुमाओं का भी मशकूर हूँ जिन्होंने ज़ाती तौर पर मेरा हवाला देकर मेरी खिदमात को सराहा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी हिमायत और ताउन से हम इस दस्तूर साज असेंबली को दुनिया के लिए एक मिसाल बना देंगे। इस असेंबली ने दो अहम काम सर अंजाम देने हैं। The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. We have to do the best we can in adopting a provincial constitution for the federal legislature of Pakistan. पहला काम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आइन को वादा करने का इंतहाई मुश्किल और जिम्मेदाराना काम है और दूसरा काम पाकिस्तान की वफाकी मुकन्ना के तौर पर एक मुकम्मल और मजबूत खुद मुख्तार इदारे के तौर पर काम करना। हमें पाकिस्तान की वफाकी मुकन्ना के लिए आर्जी आइन को अपनाने में अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। You know really that not only we ourselves are wondering, but I think the whole world is wondering at this unprecedented cyclonic revolution which has brought about the plan of creating and establishing two independent sovereign dominions in this subcontinent. आप वाकई जानते हैं कि न सिर्फ हम खुद हैरान हैं बल्कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया इस बेमिसाल बहुत बड़े इनकलाब पर हैरान है जिसने इस बड़े सगीर में दो आज़ाद खुद मुख्तार रियासतें बनाने और कायम करने का मंसूबा बनाया। As it is, it has been unprecedented. There is no parallel in the history of the world. This mighty subcontinent with all kinds of inhabitants has been brought under a plan which is titanic, unknown, unparalleled, and what is very important with regards to it,
is that we have achieved it peacefully and by means of an evolution of the greatest possible character. जैसा कि है ये बेमिसाल रहा है, दुनिया की तारीख में कोई मुतवाज़ी नहीं है। हर किस्म के बाशिंदों के साथ इस ताकतवर बड़े सगीर को एक मंसूबे के तहत लाया गया जो कि बहुत बड़ा नामालूम बेमिसाल है, और जो इसके हवाले से बहुत अहम है वो ये है कि हमने इसे पुरअमन तरीके से और सबसे बड़े मुमकिन किरदार के इर्तिका के जरिए से हासिल किया है। Dealing with our first function in this assembly, I cannot make any well-considered pronouncement at this moment, but I shall say a few things as they occur to me. मैं इस मौका पर इस असेंबली की पहली जिम्मेदारी से मुतल्लक कुछ काबिल गौर गुफ्तगू नहीं कर सकता, लेकिन मैं चंद बातें अर्ज करूंगा जो कि मेरे जहन में आती हैं। The first and foremost thing that I would like to emphasize is this: remember that you are now a sovereign legislative body and you have got all the powers. It therefore places on you the gravest responsibility as to how you should take your decisions. The first observation that I would like to make is this: you will no doubt agree with me. पहली और सबसे अहम बात जिस पर मैं जोर देना चाहूँगा, ये याद रखें कि अब आप एक खुद मुख्तार कानून साज इदारा हैं और आपको तमाम इख्तियारात मिल गए हैं, लिहाजा ये आप पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद करता है कि आप अपने फैसले कैसे करें। पहला मुशाहिदा जो मैं करना चाहता हूँ ये है कि आप बिलाशुबा मुझसे इत्तफाक करेंगे that the first duty of a government is to maintain law and order so that the life, property and religious beliefs of its subjects are fully protected by the state. कि हुकूमत का पहला फर्ज अमन व अमान बरकरार रखना है ताकि इसके अवाम की जानों, अमलाक और मजहबी अकायद की रियासत मुकम्मल तौर पर हिफाजत कर सके। The second thing that occurs to me is this: one of the biggest curses from which India is suffering, I do not say that other countries are free from it, but I think our condition is much worse, is bribery and corruption. That really is a poison. We must put that down. Hold on. We must put that down. Let me correct it. We must put that down. With an iron hand, and I hope that you will take adequate measures as soon as it is possible for this assembly to do so. दूसरी चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि सबसे बड़ी लानत जिसमें हिंदुस्तान गिरफ्तार है, मैं ये नहीं कहता दूसरे ममालिक इससे पाक हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारी हालत इनसे बदतर है, वो है रिश्वत और बदनवानी। यकीनन ये एक ज़हर है, हमें आहनी हाथों से इनसे निपटना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल्द अज जल्द जहाँ तक इस असेंबली के लिए मुमकिन है काफ़ी इक़दाम उठाएंगे। The next thing that strikes me in this here again is it is a legacy which has been passed on to us, along with many other things, good and bad. Has arrived great evil, the evil of nepotism and jobbery. I want to make it quite clear, I shall never tolerate any kind of jobbery, nepotism and influence directly or indirectly brought to bear upon me. Whenever I will find that such a practice is in vogue or is continuing anywhere, low or high, I shall certainly not countenance it. एक और चीज़ जो मुझे परेशान करती है वो ये है कि हमें वर्षे में मिली है दूसरे बहुत सी अच्छी और बड़ी चीज़ों के साथ ये बुराई हम तक आन पहुँची है, और वो है अकरबा परवरी और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल। मैं ये वाज़ह करना चाहूँगा कि मैं किसी किस्म की रिश्वतस्तानी, अकरबा परवरी या किसी किस्म का बिला वास्ता या बिल वास्ता असर बर्दाश्त नहीं करूँगा जब भी पता चलेगा कि कहीं पर कोई ऐसा काम हो रहा है छोटे या बड़े सतह पर, तो मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। I know there are people who do not quite agree with the division of India and the partition of Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now
that it has been accepted, it is the duty of every one of us to loyally abide honorably according to the agreement, which is now final and binding on all. But you must remember, as I have said, that this mighty revolution that has taken place is unprecedented. One can quite understand the feeling that exists between the two communities, wherever one community is in majority and the other is in minority. मुझे पता कि ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान, पंजाब और बंगाल की तकसीम से इत्तेफाक नहीं करते। हमारे खिलाफ बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन अब जो कि इसे तस्लीम कर लिया गया, हम सब का फ़र्ज़ है कि पूरी वफादारी के साथ इस पर कायम रहें और इस मुआहदे का एहतराम करें जो कि आखिरी और सब पर लागू होने वाला है। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा है, कि ये अजीम इनकलाब बर्पा हो चुका है, ये बेमिसाल है। कोई भी इन दो तबकात के दरमियान मौजूद एहसासात को समझ सकता है, जबकि एक तबका अक्सरियत और दूसरा अक़लियत में हो। But the question is whether it was possible or practicable to act otherwise than what has been done. A division has to take place on both sides. In Hindustan and Pakistan, there are sections of people who may not agree with it or who may not like it, but in my judgment there was no other solution, and I am sure the future history will record its verdict in favor of it. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कुछ कहा गया, क्या इसके बरक्स कुछ करना नामुमकिन या नाकाबिल अमल था? तकसीम का होना तय था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों तरफ ऐसे तबकात मौजूद हैं जो शायद इससे मुतफिक थे और ना इसे पसंद करते थे, लेकिन मेरी नज़र में इसका कोई मुतबादल हल ना था और मुझे यकीन है कि मुस्तकबिल की तारीख इसके हक़ में अपना फैसला सुनाएगी। And what is more, it will be proved by actual experience as we go on that it was the only solution of India's constitution problem. Any idea of a united India could have led us to terrific disaster. Maybe that view is correct. Maybe it's not. That remains to be seen. और मज़ीद ये कि यूँ ही हम आगे बढ़ेंगे, अमली तजर्बे से साबित होगा कि हिंदुस्तान के आइनी मसले का वाहिद हल यही था। मुत्तहिदा हिंदुस्तान के नज़रिए से भी कभी भी काम नहीं बन सकता था और मेरे ख्याल में ऐसा नज़रिया हमें खौफनाक तबाही की तरफ ले जाता है। शायद वो नज़रिया ठीक है और शायद ये ख्याल दुरुस्त ना हो, ये देखना अभी बाकी है। All the same, in this division, it was impossible to avoid the question of minorities being in one dominion or the other. Now, what was unavoidable? There is no other solution. No, what shall we do? Now, if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the masses and poor. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hate, you are bound to succeed. If you change your past and work together in a spirit that every one of you in the past, no matter what is his color, caste or creed, is first, second and last a citizen of this state, with equal rights, privileges and obligations, there will be no end to the progress you will make. बिल्कुल इसी तरह इस तकसीम में अक़लियत के सवाल से इतराज़ करना नामुमकिन था, जो कि एक रियासत या दूसरे में आबाद थे। इस मसले से बचना नामुमकिन था, इसका दूसरा कोई हल नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हम पाकिस्तान की इस अजीम रियासत को खुश और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो हमें पूरी तरह और मुकम्मल तौर पर इसके आम और बिलखसूस आम लोगों और गरीबों की मदद पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। अगर तुम माजी को भुलाकर और बाहमी इख्तलाफ ख़त्म करके तावन के साथ काम करो तो यकीनन तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम माजी को भुलाकर पूरे जज्बे और इखलास के साथ काम करो, कतई नज़र इस बात से कि तुम में से हर कोई किसी तबके से तल्लक रखता है, माजी में इसका तुम्हारे साथ कैसे तल्लक रहा है, इसका रंग और अकीदा क्या है, वो इस सियासत के यकसां हकूक, मराआत और फ़राइज़ का हामिल शहरी है, तो इस सूरत में तुम जो तरक्की करोगे इसकी कोई इंतहा नहीं होगी। I cannot emphasize it too much. We should begin to work in that spirit, and in the course of time all these angularities
of the majority and minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis, and so on, and among the Hindus, you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis, and so on, will vanish. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain freedom and independence. Else we would have been a free people long ago. No power can hold another nation, especially a nation of 400 million souls in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its sword on you for any length of time but for this. Therefore, we must learn a lesson from this. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosques or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. मैं इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दे सकता. हमें इस जज्बे के साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए और वक्त गुजरने के साथ साथ अक्सरियती और अक़लियती तबके के इख्तिलाफ़ात और इम्तियाज़ात यानी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफ़ात, और जहाँ तक मुसलमानों का तल्लक है तो इनमें पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी वगैरह जैसे तबकात और हिंदुओं के दरमियान ब्राह्मण, वैश्य, खश्तरी, बंगाली और मद्रासी जैसे तबकात मौजूद हैं. तमाम इख्तिलाफ़ात और जहाँ तक मुसलमानों का तल्लक है तो इनमें पठान, पंजाबी, शिया, सुन्नी वगैरह तबकात और हिंदुओं के दरमियान ब्राह्मण, वैश्य, खश्तरी और बंगाली. और मुझसे पूछे तो यही बात हिंदुस्तान की आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, वरना हम पहले ही आज़ाद हो चुके होते. कोई भी ताकत किसी दूसरी कौम को गुलाम बनाकर नहीं रख सकती, और ख़ास तौर पर 400 मिलियन इंसानों को कोई भी आपको फतह नहीं कर सकता था. और अगर ऐसा होता तो कोई भी तुम्हें देर तक ज़ेर तसल्लुत नहीं रख सकता था. मगर सिर्फ इसी वजह से, इसलिए हमें इस सबक हासिल करना चाहिए. तुम आज़ाद हो, तुम्हें मंदिरों में जाने की आज़ादी है, तुम्हें मस्जिदों में जाने की आज़ादी है, चाहे तुम्हारा तल्लक किसी भी मज़हब से हो, ज़ात या अक़ीदे से हो. इसकी रियासत के मामला से कोई तल्लक नहीं. Now I think we should keep that in front of us. Hold on. Sorry. Just a minute. Yes, this one. This was to be corrected. Now I think that we should keep that in front of us as our ideal, and you will find that in the course of time Hindus would cease to be Hindus and Muslims would cease to be Muslims, to be of Muslims. It's not all. Not in the religious sense, because that is the personal fate of each individual, but in the political sense as citizen of the state. अब मेरा ख्याल है कि हमें इसे अपने तौर पर अपने सामने बतौर मिसाल रखनी चाहिए. और तुम देखोगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू हिंदू नहीं रहेंगे, मुसलमान मुसलमान नहीं रहेंगे, बलियाद मजहब के नहीं, क्योंकि ये तो हर फर्द का ज़ाती अकीदा है, बल्कि सियासी एतबार से एक ही रियासत के शहरी होने की हैसियत से. Well, gentlemen, I do not wish to take up any more of your time, and thank you again for the honor you have done to me. I shall always be guided by the principle of justice and fair play, without any, as is put in political language, prejudice or ill will. In other words, partiality,
partiality or favoritism. My guiding principle will be justice and complete impartiality, and I am sure that with your support and cooperation, I can look forward to Pakistan becoming one of the greatest nations of the world. अच्छा सामीन हजरात, मैं आपका मज़ीद वक्त नहीं लेना चाहता और मुझे इज़्ज़त देने पर आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसाफ और सच्चाई के असूल हमेशा मेरी रहनुमाई करेंगे, किसी ज़ाती अनाद और नफरत के बगैर सियासी ज़बान में और किसी जानबदारी और इकरबाब परवरी के बगैर बेअल्फाज़ दीगर इंसाफ और मुकम्मल गैर जानबदारी मेरे रहनुमा असूल रहेंगे। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी हमायत और तामन से मैं पाकिस्तान को दुनिया के अजीम तरीन कौम में से एक कौम बनने की तवक्को रख सकता हूँ। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस टाइम। और फिर इसके बाद हमने जो है वो सॉलिटरी रिपर करना है नेक्स्ट यूनिट, ठीक है। तो फिर उसकी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस आई है, उसमें कुछ वर्ड्स जो है वो मिसस्पेल हो जाते हैं या मिस टाइप हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखेंगे, आज ट्रांसलेशन भी होगी इसकी। तो इसके साथ ही हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।